So let's start with inshallah ta'ala this first kind of like a question or like a point of discussion. So sohbat se seekhna ya kitabon se seekhna, YouTube, there's so much information on YouTube. I mean, you could sit in front of a YouTube and you can watch it for years and can never repeat the same video, like if you follow many other speakers. तो ये नहीं है कि knowledge की कमी है. So मेरा जो आपसे सवाल है कि सोहबत से सीखना या किताबों या YouTube से सीखना, और जो सहाबा का जो तरीका था, जिस तरह उन्होंने इतने थोड़े अरसे में जो है इतना कुछ सीखा और वो जो इस लेवल पे पहुंचे हैं, तो उसको हम किस तरह आज की लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? Prophet had he had a gift called Jawami al-Qalami, which means that since he was the biggest message and the last message, there was no room that Allah subhanahu wa ta'ala was ever going to leave for misinterpretation. So whatever he said was understood by the Sahabas as he intended to say in all of the meanings, so that there is no Chinese whisper effect. Otherwise, there would have been a way bigger problem. कि Prophet के होते तक तो इल्म था, उनके जैसे ही दुनिया से रहलत फरमाई उन्होंने, इल्म भी खत्म हो गया. Because obviously a different version is going to come out. But since Prophet did not survive, and Sahabas are going to convey the message later on, and then Tabi'is are going to convey it in their own way. The Prophet said that, every following era is going to be worse than the preceding one. Which means that everyone else is going to give you his version, not the original version, which is going to be well intended, but still it's not going to be the absolute and original version. Now, is this by design? Of course it's by design. Allah के यहाँ तुक्के नहीं है. इसका मतलब है कि जवामिल कलमी ये खास चेन तक आ सकती थी और चलती रहती. But no, even the Shiites who believe that जवामिल कलमी जो है वो इमामों के थ्रू आगे तक चलेगी, or you have to be to the imam, of course 12 imams. But then the argument is very well put that okay, I believe you. We would like to believe you. Well, who wouldn't? But then 12 people are not going to survive for the rest of the planet. And even if you say that, okay, the books are going to be recorded and preserved by the 11th Imam, because after that it's going to be a very big gap, which of course we all see now. Then there's no printing press at that time. So it was left for regular people to convey the message of the 11th Imam. So by no means, even if you want to try and stretch any logic of anybody, you're not going to be able to do what Sahabas did in the way that they did, because they had the absolute knowledge coming from the Prophet ﷺ. And it's not just because of the ability of the Sahabas, it was the ability of the Prophet ﷺ to convey every single meaning in the very absolute possible way of what Allah subhanahu wa ta'ala intended the meaning to go to. Otherwise, Nabi Islam, nauz billah, kuch aur bata baithe, jo ki Allah ne nahi batana tha. या अल्लाह ने बताना कुछ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फ्लेवर बदल दिया. It's not gonna happen. That's against the very नहीं साहब, चले ये तो बात ठीक है. And but moving on, like आज के एरा में, ठीक है, आपने बोला जिस तरह वो खुलफा राशिदीन आए और मतलब हजरत अबू बकर, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, हजरत अली, फिर वहाँ पे फितने स्टार्ट हो गए. And then I mean, it gotten worse over a period of time. I understand that. लेकिन चलें आप उसको देख लें कि before चलें आप आज के उस पे कमेंट करके मुझे बताएं कि जिस तरह आज बहुत ज़्यादा आप 23 साल में एक पूरी जनरेशन एज ऑफ इस्लाम रिवाइव नहीं कर सकते. They did that because they had the Prophet with them. I mean, we can do that, but it's going to take a few generations now. Or so what is your
आप फ्रॉम द लर्निंग, सीखने में, लाइक एक कॉल और फेथ में जो तजाद है जिसको हम खत्म कर सकें। क्योंकि देखें, यूट्यूब अच्छी बात है, हर चीज तो हर कोई देखता ही है, मैं भी देखता हूँ, हम सब देखते हैं, बहुत ज्यादा यूथ देखती है, and that's why they're motivated toward people like you who have something positive to say than something like totally negative। इसलिए वो ज्यादा वो ये जो हेट स्पीचेस ज्यादातर जो लोग करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, आई डोंट वांट टू नेम देम, इट्स नॉट वर्थ नेमिंग, बट फ्रॉम फिरका वारियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दे आर नॉट इवन दैट, लाइक उनके कोई इतने हिट्स भी नहीं है, कोई वो भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम उस लेवल की जो चेंज है, बिकॉज ये ऐसा नहीं है कि ये जो जितना भी जो नॉलेज जो हम अब्सॉर्ब कर रहे हैं, it just doesn't go nowhere, we have too much knowledge, but almost how do we like channel it, like मेरी जहाँ तक मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, आप इसमें मुझे जरा करेक्ट कीजिएगा, कि सोहबत में सीखना बहुत जरूरी है, कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं? There are different ways of learning. Sobat mein seekhna is kinesthetic learning or group learning. And learning from books is audio-visual learning. Well, visual learning to be exact. So there are different ways of learning. There's no replacement कि सोबत में सीखना ज़्यादा फायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि you can see the application of that knowledge, because सोबत का सीखने का मतलब क्लासरूम में जाना तो नहीं है ना, सोबत में सीखने का मतलब है you live with that person, you know, see the application of whatever you're trying to learn. So, book का तो मतलब है कि okay, it's a theory. I mean, if it is, I mean, it could be anything, and you can still ask the question, okay, how do you apply that? And you can, at best, get to read the case studies in books, but you cannot see it. If you cannot see it, it's not kinesthetic. If you're not kinesthetic, you're not going to be able to feel it. And if you're not going to feel it, you're not going to be able to internalize it and produce the same sort of gold mine in your own self, through your own self, which you just read in the book. So it's ideal कि सोबत में भी और किताबों में भी कॉम्बो लगा के आप सारा कुछ कर रहे हो। ज़्यादातर उलमा सोबत के साथ किताबें ही पढ़ा रहे होते। So, but scientifically speaking, if you have to choose, sohbat is going to trump the book. Sohbat of the right people. Now, what you asked about is कि आजकल कॉल फेल का तजाद है, तो कॉल फेल का तजाद हमारे डिज़ाइन में है. We are very idealistic people, and we won't be able to perform that idealism through our action because of so many constraints on us. And if you look at the intent of great people, you'll find no hypocrisy there. But if you find their own very behavior, you'll find at least some considerable traces of hypocrisy. Not to say that they're totally hypocrites, but a lot of people who are the people of the book are still going to give you a little bit of hypocrisy to witness. So let's just forget about it. It's like it's a non-factor, non-issue, because hypocrisy could be from many. I mean, visible, apparent hypocrisy could be for many reasons, but I mean, there is no human being who's going to be perfect now, and no human being who's going to be error and sin-free. So hypocrisy तो सबके अंदर है ही है. मतलब उनके अंदर नहीं है जो बरमला गुनाह करते हैं, कहते हैं हम ही गुनाहगार, चाहते भी गुनाह ही हैं, दोज़ख में डालना हमें. Hypocrisy उनमें आती है जो लोगों को तो तरगीब दे देते हैं, but you can see that there is a problem with them. But of course there is a problem with them. They're not prophets. They're not God. They're not angels. Human beings are naturally going to. मतलब इसका तो ये मतलब हुआ कि जब तक मैं एंजेलिक नूर ही अपने अंदर लेकर आता, मैं किसी एक बंदे को भी कुछ भी ना सिखाऊं. You know what I'm saying? So hypocrisy is इसको एक्सट्रीम पे लेके ही मेजर करें कि ऐसा बंदा जो अल्लाह का दुश्मन हो और जान के आप हमें दोस्त बना हुआ हो अल्लाह का दुश्मन होने के बावजूद, he hates Islam or he hates the very concept of whatever Islam has to teach, और वो बस इसलिए बैठा हुआ है मेरा दावत दे रहा है जिसकी वो खुद असर अमल नहीं पूरे नहीं कर सकता. तो उसका मतलब है कि प्रॉफेसर ने इसी को कंट्रोल करने के लिए कहा कि अगर तुम खुद अच्छा काम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लोगों को तो तरगीब दे दो कि अच्छा काम किया. तो आपकी इस बात पे वो एक
I don't know. I'm trying to remember if it's a hadith है या कुरान से है कि जिस तरह वो बात I think it's from कुरान कि आप वो बात मतलब जो तरकीब देना लेकिन खुद ना करना तो उसमें भी फिर बहुत केयरफुल इसमें और इसमें क्या कॉन्ट्राडिक्टिंग चीज है जिस तरह आप जब भी आपने मुझे बोला है कि वो तरकीब Well, in कम this से कम case, बात करना well, जिसको तरकीब दे रहे हैं उसने भी वो काम पूरा नहीं उसी तरह नहीं कर सकते, even though he is going to nod his head or say yes or become a fan or follower. But whoever is giving the targheeb or dawah, the audience should realize that he too is just a human being. He's going to make some mistakes. Actually, that's the beauty of this da'i. If he was a perfect man, then it would have been a lot more scary. We would not have been able to handle that because of our lack of many skills and senses. Memory being one of them. और मेरा अब एक और आपसे जो एक क्वेश्चन है वो आपके वो क्लब हाउस की जो आपने आपका सेशन में सुन रहा था कल या परसों उसमें बात कर रहे थे अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम एंड द टॉपिक वाज अराउंड द पॉलिटिक्स तो एक क्वेश्चन जो मेरे एक जहन में आया है कि जब कायदा से जना से पूछा गया कि पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन क्या होगा तो उन्होंने जवाब दिया था कि कुरान बेसिकली तो ये जो गैप है जो है जो ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ इवन दो द विजन वाज सो क्लियर हमारे पास द विजन वाज फ्रॉम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह और हमारे पास कायदा जना थे और एवरीथिंग वाज इतनी कुर्बानियां भी दी हमने सारा कुछ हुआ और कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना तो why wasn't it implemented? Where do you think the gap came? Well, Kanyaram, in the later days, you must have noticed was okay. Let me give you a brief point of view about Muhammad al-Jinnah, as far as I can tell, because I read a lot and I've noticed a lot of things that Jinnah was going through. Most of the people, like let's just take Liaquat Ali Khan, for example. Look at his life. He's the guy who is a successor of Jinnah, right? Yeah. So look at his life before and after Jinnah. You'll find out that he was just contained by Jinnah. And many like him were just contained by Jinnah because they were looking for a country where they can actually exercise whatever they want to exercise. And Jinnah too was not a classical Muslim, nor was he ever a scholar, nor was he ever claiming to be one. He was trying to get, I think he realized that Pakistan ka banna bahut zaruri ho gaya because of the survival of whatever Muslim sanctity that is left in India. And he was actually talking to the people that of course, this is my opinion, and I have a lot of data to prove it though, but still it's just my opinion. It's not written anywhere. But he knew that inke aas-paas jitne bhi log hain na, they're not going to be able to do anything. So whatever he could do, he started doing कि constitution में भी उसी तरीके की बात लिखी जाए. ना सिर्फ constitution में लिखी जाए कि आम आवाम को पता हो कि मैंने जो कुछ करना था कर लिया, अब तुम ही बचाओ अल्लाह रसूल के दीन को यहाँ पे, क्योंकि जो बंदे पॉलिटिक्स की वजह से मेरे पास आ गए हुए थे उनको इस्लाम का अलिफ भी नहीं पता. Liaquat Ali Khan did not know jack about Islam. You know what I'm saying? He was, nor did anyone else other than Maulana Shaukat Ali. And those two people didn't have much. And then we got stuck with this Anglo-Saxon law, right? So which not is to this day. Just Anglo. Look at the life that Liaquat Ali Khan was living in, the way he was treating whatever he was treating, and then comes Ayub Khan, and oh my God, the worst thing that ever happened to Pakistan was Ayub Khan. So the question is, where was Ayub Khan when Muhammad al-Jinnah was alive? Obviously, he was there.
they were just waiting कि मोहम्मद जिन्ना की इतनी पावर क्रिएट हो चुकी हुई है कि उसको कुछ नहीं कर सकते। एंड जैसे ही जिन्ना साहब फौत हुए हैं उसके बाद उन्होंने फातिमा जिन्ना को मार दिया, because she was not as powerful in people as जिन्ना साहब was obviously. So जिन्ना साहब न्यू के अच्छा यार अवाम को तो मैं बता दूं, अवाम को तो जो कह सकता हूँ कर लूँ, अदरवाइज ये 2 नंबर लोग मेरे आसपास ही इकट्ठे हैं जिनको पाकिस्तान अभी भी हीरो मानता है फॉर सम रीजन। सिर्फ कहानियां सुनी हुई है कि लियाकत अली खान ने ये कर दिया तो वो कर दिया। व्हाट डिड ही डू? आई वांट टू नो व्हाट ही डिड। नथिंग इफ एनीथिंग। I actually that's why मैंने ये क्वेश्चन जो है मैंने बेस किया है all the way back to Qaeda Muhammad Ali Jinnah. Like actually where did this whole Anglo-Saxon laws that came in, the laws are so old and still not entirely representing Quran or Sunnah, but they're still being, जब पाकिस्तान बन गया तो वो चीज दोबारा क्यों incorporate हो गई इसके अंदर? Like I wanted to क्योंकि go to the वो root. उसी में पले बड़े हुए, उसी गटर के पले हुए बड़े थे, उनको तो वो गटर बहुत बड़ी जन्नत लगता था ना। यू कैन सी पहले 15 साल में पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट्स ने अमेरिका और यूरोप को जिस लेवल पे ओपनली इनवाइट किया था कि हम आप जैसे ही हैं, प्लीज आए ना। दे वांटेड टू हैव दिस वियर्ड सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड दे वर। वो तो अब भी चल रहा है। हाँ, मगर अब अवाम की जो बेसिक एक्यूमेन है ना बड़े बड़े शहरों में, वो पहचान लेते हैं कि यार ये तो इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप जरा नोटिस करें उस दौर की जनरेशन के अमूमी यूथ को तो कुरान पाक दूर से भी नहीं गुजरा था। दे डिडंट इवन नो, बस इमोशनल स्पीचें सुन सुन के समझते थे मुसलमान स्कॉलर है कोई, और वो क्लेम भी नहीं करता था स्कॉलर है, बस ये कह रहे थे बस। Actually, I'll tell you a little funny story about that. आपने जो बात की है कि मेरी 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 वालदा से बात हो रही थी, तो मेरी वालदा की जो दादी थी उन्होंने कहा कि भाई छोटे थे ये, तो कहती हैं उन्होंने, मेरी दादी ने उन्हें बोला कि भाई तुम लोग नमाज नमाज पढ़या करो तुसी, हैं तो नमाज पढ़या करो तुसी। तो वो ना अम्मी और वो बाकी थी वो कहती हैं भाई तुसी ते होने शुरू की है, तो मतलब आपने तो अभी शुरू किया, और पहले तो आप तो पढ़ते ही, आपने तो इतने अरसे बाद शुरू किया, आपने हमारी उम्र में कब नमाजें पढ़ी हैं? तो उन्होंने कहा साडे वाले कोई रिवाज होंदा सी नमाज पढ़न दा। मतलब यानी कि ये एक इट वाज लाइक सच अ लाइक, सो इससे मेंटालिटी एक पता लगती है कि लाइक या यू आर एब्सोल्युटली राइट कि दीन का इतना नॉलेज नहीं था। So yeah, you're right. Now, so this thing जो आपने जो phenomena explain किया है वो it is so it is still active, and then which takes me to the next question. ठीक है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में जब जाते थे नमाज पढ़ते थे, और बुत भी वहीं पे ही होते थे, वहीं पे वो नमाज पढ़ते थे, तो मतलब he did not necessarily just take out the idols, and like in the presence of the idols he would pray. तो और जब फतह मक्का हुई है फिर उसके बाद मतलब वो सारे बुत शुत वो सारे मतलब खत्म किए हैं क्योंकि वो सारा हो गया है। तो इसमें मैं ये आपसे इस चीज को मैं इंकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूँ बैक इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम। माय क्वेश्चन टू यू इज, काफी जो आलम दीन है हमारे उनकी डिफरेंट राय है। कोई कहता है कि जी सिस्टम के अंदर जाके उसको चेंज करना है तो ऐसे ही चेंज आएगी, कोई कहता है कि नहीं सिस्टम से बाहर रह के चेंज करना है, ये बातिल निज़ाम है। regardless of what my opinion is about that, I want you to do a little bit of um, I want you to give a little bit of feedback, because I think personally, including me and a lot of other people, are confused about this whole phenomena क्योंकि आधी तरफ से कुछ चीज आ रही है, आधी तरफ से कुछ चीज आ रही है। तो इस पॉलिटिकल सिस्टम को अगर सुन्ना की बेस पे देखा जाए तो उनके जिस तरह उन्होंने खाना काबा के अंदर रह के मतलब he became part of the system, not that कि उन्होंने कोई शिरक किया, but he dissolved himself in the system or tried to till he could separate. But उसको हम आज में क्या हम पॉलिटिकल पार्टी कोई अपनी फॉर्म कर सकते हैं कि जिस पे कहें कि यार हमारा जो वोट पार्टी का जो मकसद है वो है कुरान एंड सुन्ना, और मतलब हमारे जो और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हमने इस डॉक्ट्रिन को जो पाकिस्तानी जो 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 निज़ाम बना हुआ है, जो दिस होल एंग्लो लॉज, वी नीड टू change them into the Islamic doctrine. So what is your take on it between um,
forming a party which is totally dedicated for the sake of Allah, or staying outside and try to clean out this filthy system of our political nizam jo hamara bana hua hai. Well, see, the answer is not in the Quran. Answer is the Quran. So जब तक कुरान पूरा नहीं हुआ था तब तक कि किसी भी लेवल की प्रेसिडेंस लेना जो है ना वो रिस्की है. कुरान जब नाजिल हो चुका था उसके बाद जो नबी इस्लाम ने किया वो प्रेसिडेंस जो है ना वो एब्सोल्यूट है. नाउ सहाबा खुद कहते रहे, जब हम मक्के की बात कर रहे हैं तो हमजा जो है ना रोना शुरू हो गए. नबी इस्लाम से कहा कि कुछ करें, अल्लाह से बात करें और हमें जिहाद का हुक्म फर्ज करवाएं. नबी इस्लाम क्या कहते थे? इस बेर सब्र करो, अल्लाह को ज़्यादा पता. So it's not like people didn't want to fight. They were told by Allah subhanahu wa ta'ala not to fight. Now, if I put that logic कि मक्के में के early life में तो नबी इस्लाम ने जिहाद का हुक्म ही नहीं दिया. पहली बात तो दे दिया था एंड में, मगर अल्लाह ताला ने हुक्म देना, नबी इस्लाम ने नहीं देना. अल्लाह ताला ने जब आयत नाजिल कर दी कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तो बस अब हम वापस मक्के में नहीं जाएंगे क्योंकि अब वो आयत आ चुकी हुई है. और ना सिर्फ एक, काफ़ी सारी ऐसी है ना. वी आर बोर्न आफ्टर द कुरान, नॉट ड्यूरिंग द कुरान. तो ड्यूरिंग द कुरान वाली जितनी भी ट्रांजिटोरी जनरेशन, उनके बचपन में कोई और, लड़कपन में कोई और हुक्म का इतलाक है और बड़ी उम्र में इस्लाम का इतलाक पूरी तरह. सो लेट्स जस्ट से कि अबू बकर सिद्दीक के सामने जब मामलात हुए तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि यार पहले भी तो नबी इस्लाम ने जीरो से स्टार्ट किया था तो बुतों को एक्सेप्ट ही किया था. नो, ही सेड अब तो खत्म हो गई कहानी, अब तो बुत तोड़ दिए हमने, अब किस बात की हम दोबारा जान जान के मक्के की लाइफ में जाएं. We have to do whatever we saw the process of doing in the last of days, not the first days. Actually, yeah, you answered another question of mine. Wo jo story is about Hazrat Sumayya, and actually जब वो सारा जुल्म हो रहा था उस टाइम पे तकरीबन 40 के करीब तो मुसलमान थे और nobody stopped him to do जो भी जुल्म हो रहा था या हज़रत बिलाल पे जो जुल्म हो रहा था. Okay, so okay, so it's kind of makes sense. सही. और तो फिर आज के दौर में क्या किया जाए? पार्टी बनाई जाए, नहीं बनाई जाए? कैसे किया जाए इसको? Boycott elections. बॉयकॉट इलेक्शन में फिर भी कोई ना कोई तो आ ही जाएगा. नो, आप वही पार्टी बनाएं जो वोट नहीं डालती, वही पार्टी को फिर एनहांस करेंगे. जब एक पार्टी वोट ना डालने का ऐद कर चुकी है तो इलेक्शन और डेमोक्रेसी में तो नहीं आएगी ना. नहीं तो मिसाल के तौर पे I'm just trying to put my head around it कि अगर हमारी 20 करोड़ अवाम है और उसमें से 19 करोड़ अवाम वोट नहीं डाल रही है, 1 करोड़ पे भी डाल रही है, तो उस बेस पे भी तो प्रेसिडेंट या हर चीज, पार्लियामेंट वगैरह हर चीज सेलेक्ट तो हो जाएगी. पार्लियामेंट का तो बेसिक रूल है कि इफ इनफ नंबर ऑफ पीपल आर बैकिंग यू अप, ट्रीट इट लाइक इट इज फ्रॉम गॉड. सही. बट इसके लिए तो सड़कों पे आना पड़ेगा. नहीं, सड़कों पे ही तो नहीं आना, सड़कों पे आके तो वोट डालते हैं ना. बॉयकॉट द डैम थिंग. मेरे जैसे कईयों ने बॉयकॉट किया हुआ है. I don't vote anymore, so but what change is it bringing? I really question that, that's the change is brought one by one, so you will start the process to snowball down many people. This leads to another question. आपने अपने कुछ लेक्चर्स में एक टर्म यूज की थी कि लागर मोमिन नहीं बनना, और
इस इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब है ला गैर मोमिन नहीं बनना? Like ज़ईफ मोमिन नहीं बनना. एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो फुकरा सहाबा थे, how does that is not that lage doesn't mean financially, it means spiritually, Physically. right? No, it means Physically. physically. Well, it also means spiritually, and it also means financially. But when it is used the way you is using it, तो उसका मतलब तो ईमान की कमजोरी है. He's going to run away in the moment of truth. Actually, he's never even going to fight. Run away तो fight के बीच में होता है. So is physical पैसे से, I mean क्योंकि अगर इसमें आप अगर वर्ल्डली, ठीक है आप एक कैरियर चेज करते हैं, बट आप ये कैसे मैसेज देना चाहेंगे जो यूथ है आजकल की, like it's all about man, this guy makes so much money and that guy makes so much money, he's a billionaire, he's a trillionaire, this is the idea that made him rich, and everybody wants to get rich overnight. Nobody wants to go through the whole process of actually learning and developing the character while making money. That's आजकल की यूथ से हर चीज उठ चुकी हुई है. But आप इसको क्या मतलब what advice can you give to the youth to keep that a balance, कि लागर मोमिन में नहीं बनना, करियर को भी लेके चलना है, और साथ जो करियर को दीन की नजर में लेके चलना है, बट वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें? कुछ ऐसी कोई एडवाइस हो जो आपके पास? Well, लागा के अंदर 4 कोऑर्डिनेट्स हैं. फिजिकल क्वेश्चंस जो है ना उनको पूरी तरह एस्टैब्लिश करें बच्चों में. They should be the most active people in the world. Then mental quotients. They should be advocates and they should be fighting the big case for Islam all the time, against atheism, against other policies. And then there is emotional quotients. They should know when to shut up, when to talk, when to raise your volume, when to use your body language to close a sale. Once these 4 or 5 different pillars are locked, rest is just sinking together. तो ऐसी क्या चीज है कि जो capitalism was introduced and everybody's chasing that illusion or power, dream. and power is insatiably so deeper how can we requirement. shift that power in our favor for the Muslims? Well, you don't have to shift it on your favor. You have to shift it on wherever it is like Allah की तरफ लेके जाना लोगों को. आपके पास कोई भी नहीं आएगा. अल्लाह के पास बड़े लोग आ जाएंगे. See, it's a game numbers by the end of the day. Yeah, I mean that's what I meant. Okay. No, what do you think Imran Khan and Nawaz Sharif do? They lie about shifting the power back to the people. There is no power to the people. Can't even meet Imran Khan for God's sake. गोली मार देंगे. पाकिस्तानी आपको गोली मार देंगे अगर आपने कहा मैंने इमरान खान से मिलना है तो पार्लियामेंट हाउस के बाहर. Security protocol है जी. Yeah, actually, I have to. It kind of opened up my brain, and I wanted to kind of give you a feedback of something that I think you mentioned about this whole thing about the TV shows or your talk shows or वो सारा जो चीज़ चल रही है, and believe it, it's such a एक चीज होती है ना जो आपकी आंखों के आगे हो रही है लेकिन आपको उसका अंदाजा नहीं होता कि what kind of impact is it causing on you. And I just realized that today, like someone forwarded Imran Khan ki kuch wo jo WhatsApp mein, they forwarded like this little clip about how Bilawal misconstrued something Urdu line or something, and now he's standing on the podium and he's taking like
those jabs at him, like at a very personal level, you know. I have no sympathy with for any of them. Don't get me wrong here, you know. But the thing is कि इसमें आप कौन से मदीना की रियासत खड़ी कर रहे हैं, या इसमें आप क्या लोगों को आपके आगे जो लाखों सुन रहे हैं और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो नहीं सुन रहा या सुन रहा है, who knows, right? But you're not sure if he's listening to you or not, you know, unless he's standing right in front of you. So what kind of a character building are you giving it to the people while people are cheering? You know, ye ek jahalat, like I didn't see it as a jahalat till you made that yeah, you know, it is so right. अगर आप इसको कुरान की रूह से देखा जाए तो बाद मदीना रियासत की कर रहा है और दरिया में इस्लाम की उड़ाई जा रहा है साथ साथ, you know, which is like, you know, ये चीज, ये फहम जो है ना, ये आना यूथ में बहुत जरूरी है. एंड यू आर राइट, कुरान से ही ये चीज आती है, कुरान ही ये चीज समझाता है. बट थोड़ा सा इस पे करेंगे, थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट कीजिएगा कि किस माइंडसेट से यूथ शुड चेज देयर करियर. आई मीन, यू नो, कोई ऑब्जेक्टिव सी कोई चीज उनको बताएं ताकि उनके जहन में हो, लाइक, you know. They shouldn't chase a career. They should chase a bigger population to come towards Allah subhanahu wa ta'ala's system, become a way bigger part of their spiritual curve. And money should be part of their competence program. Like जो भी काम करते हैं वो उसमें super competent हों. But career अगर पैसों को बनाएंगे तो फिर 24 में से 20 घंटे पैसों को देने पड़ेंगे, वरना career नहीं बनता. You can see all the people who have great careers in America. They spend 80 hours a week, for God's sakes, in their law firms and hospitals and whatnot. I used to spend 72 hours a week, but There not you go. anymore. So, Yeah. but, So I'm not saying to spend 8 hours a week. I'm just saying, okay, we want to spend 8 hours. Okay, then just spend 8 hours. Okay. Rest of the 40 hours of a week should go towards your bigger religion, because that's just the least you can do to equify the whole equation, right? Balance it out. But if you really are true to the purpose, then you will start to cut down your hours from money making to jannah making. पैसों की ना जरूरत से इनकार है, ना मुझे उसके बनाने वाले की अमाउंट से कोई इनकार है. I'm just talking about the purpose that people set as money, and they keep saving and saving it ताकि नंबर बड़ा से बड़ा होता रहे. 2 0 3 0 अगले साल 4 0 एक्स्ट्रा कर दूंगा. अल्लाह ताला ने बता दिया यार, ये देखो, ये समझ रहे सारी उम्र ऐसे कर सकता है. It's not. He keeps on saving and counting his money, and he's thinking that it's going to be forever. तो इसमें अब वो जो प्रेशर जो है जो एक यूथ पे आता है, actually I'm relieving that pressure ना कि यार ना तुम बिलियनियर की गेम खेलो, ठीक है, 50,000 की नौकरी कर लेना, मगर तुम्हारी इज्जत पैसों की वजह से जो हो रही है वो तुम्हारा शिर्क है या एटलीस्ट रियाकारी है या किबर है. तो उस इज्जत को छोड़ दो, लोगों को कह दे दो बड़ा गरीब का बच्चा है मगर प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग है और सिस्टम के लिए बड़ी लड़ाई करने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए किसी भी सेकंड में तैयार रहता है. Respect is gonna give you back your chemistry, and you're not gonna think about कि पैसे कितने कम या ज़्यादा हैं. वैसे भी पैसों का मामला तो इंसानों के हाथ में है नहीं. I mean, that's a basic tenet of Islam. And let's not blame them for making more or less money, whoever those guys are. What I do blame them is for having zero purpose. अगले 10 साल का पता ही नहीं है. डेली लाइफ के इस्लाम है सारे मुसलमान. इस्लाम में भी तो करियर ही बनता है ना, वो भी तो फुल टाइम ही मांगता है. You cannot have two full-time jobs. You know it. There's not enough energy in the body and hours in the clock. और एक और जो चीज़ है जो यूथ पे अक्सर ये, मतलब क्योंकि मैं आपके काफ़ी लेक्चर्स वगैरह सुनता हूँ तो उसमें यही समझ आता है. कई दफ़ा आपसे ये सवाल भी किया गया है कि अभी हम पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें. You know, like you know the problem, they know the problem. It's an old way of thinking in a sense, not old bad way of thinking, not even a good way of thinking. Okay, what are the priorities of life? So the thing is, how do they like how do they break away from that? लियाकत अली खान, अयूब खान की जनरेशन है ना, ये सारी जो पिछली है अयूब खान की जनरेशन है. And maybe 10 years after him, असरात वही हैं इनके ऊपर. So you gotta treat them with love. They're your parents, and never give up on them.
Next point of discussion is that we already know how those The same rule dopamine. does not apply on husbands, right? Husband का रिश्ता तो हम लोगों ने खुद बनाया होता है ना, बीवी का हस्बैंड का. माँ बाप का रिश्ता अल्लाह ने बनाया हुआ. You can never ever go away from them. अल्लाह के हाथ वैसे में खुद है. एक और चीज समझ में थोड़ी सी मेरी समझ से बाला तर है कि एक कल्चर था काफी अर्से पहले पाकिस्तान में, अरेंज मैरिजेस का, दिस काइंड ऑफ लाइक फेजिंग आउट, लाइक लॉट ऑफ लव मैरिजेस एंड स्टफ इज हैपनिंग. और उस पे जो है लड़का और लड़की जो यंग ब्लड है हमारे, उन पे तो ये बात मनवा लेते हैं अपने माँ बाप से. तो इस पे आके ये थोड़े लागर हो जाते हैं. माँ बाप तो शुरू से इसमें पले हैं, कैसे में हम चेंज करेंगे. ठीक है, फिर बाकी के केस में बिना चेंज करें ना, अपनी मर्जी से तो बड़ी जल्दी चेंज कर लेते हैं. तो this is something that kind of fascinates me. Like अगर किसी लड़के को कोई पसंद आ गई है, ठीक है, उसने मतलब जैसे तैसे जो है ना 95% लड़के ने भी लड़की ने भी शादी कर ही लेनी है. या मना के करें, जैसे मर्जी करें, भूख हड़ताल कर दें या जो मर्जी कर दें, हैं. और उसमें वो कर ही लेते हैं. लेकिन यहाँ जहाँ पे दीन की बात आती है वहां पे कहती हैं जी कैसे किया जाए, माँ बाप तो बड़े वो है, तो वो तो ऐसे हो जाता है. तो मैंने वो कहा बड़ी यार अजीब जहाँ पे सोच है आपने यार. मनवानी होती है बातें, वहां पे तो आप जान लगा देते हैं. जी हाँ. But anyway, so how do you think dopamine? Well, we already know from your talks about the dopamine, the whole science of it. But how do you think dopamine react when you immerse yourself deeply into the whole philosophy of Islam and understanding of Quran and Sunnah and its teachings? Um, yeah. It What doesn't. is the आखिरत का impact? कॉन्सेप्ट एंटी डोपामिनर्जिक है. Okay. गैब है ना, गैब में डोपामिन, Mhm. गैब के कॉन्सेप्ट पे डोपामिन ट्रिगर ही नहीं हो सकती. But what Dopamine if only you, triggers when you can see that a reward. but you picture Jannah in your head and like हाँ. जिस तरह Quran में describe की गई But है, and then we all it's know कि Jannah, euphorical. it is, but we don't know whether whatever the picture that we have is actually going to be the way it is going to be, right? Of course, of course, of So no course. dopamine That there. is. Uh, अगर आप डोपामिन के लिए सवाब कर सकते हैं आप, ओके, बट दैट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम. आप फिर इसका मतलब है कुछ देखने दिखाने के लिए या अपने आप को अचीवमेंट कर रहे हैं कि हाँ मैं बहुत बड़ा सवाब वाला बंदा हूँ, मैं तो साबी हो गया हूँ. no. What if like you're only aiming at Jannah? Isn't that prescribed in Quran? Cannot, it is, but it's not, cannot be dopamine. But it is the right thing to do. Aiming for Jannah only. यार मैं जन्नत के लिए कर रहा हूँ, जन्नत के लिए कर रहा हूँ. That is right, Of right? course. Okay. Of course. Okay. And then like once जब आप इस चीज पे आप करते हैं, like you're doing more and more of in this you know the shift of powers, you try to understand, you try to do, but then you get pulled back. I assume it's shaitan, waswasa shaitan and all those things. And a lot of time you just don't have energy, and it's kind of like you feel that you're trying to make a change in your life and in the lives of people around you, but it seems like आप दीवार से सर मार रहे हैं या भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं. तो how to overcome that? Fear and That fascination. you said fear and fascination. Yeah, trigger their fascination and mitigate their fear. Bashiram wa Nazira. There's no human being who's going to fall for either or both of them. Mitigation of his own fear. It's called sense of security. And if you give him that, he's going to actually be in your club before you even get there. And fascination, which is the description, high resolution description of Allah subhanahu wa ta'ala and Jannah. That's fascination.
फिर तो तब आएगा ना कि अगर उसको रजिस्टर करेगा, मतलब if you Yeah, don't Muslims register. know. That's why I'm for the debate for atheism if you can actually only talk about the outputs of atheism and monotheism. Monotheism दुनिया में मोटिवेट होने नहीं देता आपको। आपको पता होता है जितने मर्जी पैसे बना लो, आपसे ज़्यादा पैसे वाला एक ना एक पाया जाता है। और दुनिया की तो औकात इतनी थोड़ी है कि आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आप $1 बिलियन खर्च भी कर सकें। You know what I'm saying? I mean, what is Bill Gates going to do with all his money? He told us. He said, I'm going to give 10 million to my son. And rest everything, every penny is going to the charity. So उसकी डोपामिन ने पूरी हुई तो उसको पता चला इसका कोई फायदा नहीं हो रहा यार, ये तो बोर कर रही है मुझे. So he jumped into philanthropy and trying to save the planet. Yeah, yeah, that is sure what he's doing. Whatever he did, I'm just saying. Or let's see. So when you said about atheism, right? इससे एक और चीज मेरे ज़हन में आती है कि I get a feeling that atheism has many forms. You know, one is atheism कि you know there's no such thing as God, right? ठीक है, कुछ कहते हैं yeah there is God, but then there might be hello. Yeah, yeah. Hello. Oh, sorry. Yeah. So some say that there is no there is God, but once you die, you just go to sleep. Like that's it. Nothing happens. You know. So there's different forms of this atheism. In a sense, I दोनों feel को that अल्लाह there's ने out there. एक ही कुरान में दोनों को अलग अलग तरीके से कहा ना. अराइत الذي يكذب بالدين. Have you seen the guy who defies or denies, refutes the day of judgment? You know what I'm saying? Akhira concept is way like it's so detailed. There's so much detail about this by Allah Azza wa Jal himself. That as we started this session by saying there are no coincidences, right? So it was not a coincidence. Allah subhanahu wa ta'ala enforced the first phase of Islam through the concept of Akhira only. Nothing to do with whatever you gotta do as part of the legislation of Islam. Legislations came in way later. Once the chapter of Akhira was closed. For 8 years straight up, only Akhira discussion Allah subhanahu wa ta'ala gave in the Quran. That checks up on your chemistry. Make sure that wrong chemistry is not triggered. अपने लिए या लोगों को दिखाने के लिए या whatever, you know what I'm saying. So see how the Prophet is complementing the Quran all the way. That's what it's called by innaka la khuluqin Quran. You know what I'm saying? He's complementing the Quran all the way. He's actually, living it out in front of us, debating through the Quran about why the necessity of Akhirah is inevitable. It's in our design. We need the bigger justice system. So nowadays जो history मेरा अगला सवाल है history से मुतालिक. In a sense, जब during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahaba, as I study, Arab was very secluded in a sense from the Romans and for everybody from the Persians. Those were the two main superpower of the time. Or बीच में से मुसलमान, by the blessing of Allah, then they emerged, right? So obviously Sahaba didn't really go so much deep in history. They were ज़्यादातर वहाँ पे काफी जहालत थी. So is that true, right? Yep. Right. So my question is कि हम और अगर उस रूह से देखा जाए, जिस तरह से
I mean, we already talked about कि Prophet sallallahu alaihi wasallam ने तो एक दीन मुकम्मल कर दिया, but लेकिन उनको इतनी ज़्यादा histories और philosophies में नहीं डाला, like कुरान की रूह से. So my question is कि हम आजकल जो most of this हमारे जो Islamic scholars हैं और ये सारे जो दीन की बातें करने वाले majority of the ulamas हैं, I mean they wrap current Musliman too much around the old affairs, you know, कि तफरीक कहाँ पे आई, ये कहाँ पे आया, वो जंगे you know जो दूसरे जो गज़वात और जंगा जो साहबा एक दूसरे के आपस में खड़े हो गए थे, the significance of them, and then it's like they instead of like Quran की simplicity समझाएं, why is the whole focus of all these people are toward the history, which does not solve our current problems? Yeah, well, there's a different kind of mental class that exists in human beings. The highest of the classes is irrelevant of what history is. They use history as an instrument to understand the human behavior only. Okay, but their purpose is to understand the bigger questions of the universe that lie right in front of us, as to where are the stars coming from, why are they there, what kind of placement do we have in the planet, and what kind of placement does this planet have in the universe? What is the concept of Allah subhanahu wa ta'ala? How is it benefiting? See, all of this is higher mental class. It's called intellectualism. The lower class is what happened to people. They just want to talk about stories of people and whatever happened to people, and they get a kick out of this. I mean, so much. Okay, I know एक सही होगा, एक गलत होगा, लेकिन why so much energy is being wasted on that? Well, they have a lot of energy to waste and no acumen to understand where they're supposed to invest that energy. Okay. And human beings are going to channel their energy no matter what, even if they just want to sit down around and someone's talking about really important stuff. And, you know, people are just watching their Insta reels, you know what I'm saying? Instead of focusing on the real message. I see. So that is your message too, that don't, what is That's your dopamine message nurture. to this? Well, if you're too addicted to your own whims and fancies, then you're gonna miss out on the bigger train, which is a higher mental class faculty of intellectualism. And people who actually solve the bigger problems are in that faculty. And everyone wants to be in that faculty. They just don't know that they exist because they're not trained by their parents to raise their mental class. फिर वो ज़रा इंसान तो चैनल तो करेगा ना जी, तो लोगों की बातें करना में तो चस्के लेते हैं फिर. Yeah. Okay, thank you so much, Sahil bhai. Inshallah ta'ala, we got through some of the questions, and then we're gonna keep on following up. I'm gonna be watching your every lecture that I can, and then inshallah ta'ala, I would like to share with everyone as much as I can, so maybe other people can learn from it as well, and then we will inshallah continue on to the next session. Inshallah, of course, man, of course.